let me finish. Let me finish the chanting, okay? Because I felt like this was glitching here. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Nitai Gaura Premanande Haribol. Okay, before I start, Saurabh asked me to tell everybody we're going to have the Vyasa Puja of Srila Prabhupada. So he asked me to mention this to everybody. Antara is saying yes, yes. I think she got the message also. So we're gonna write a little offering for Srila Prabhupada. I'll be there. So be a happy family. We'll do a little few words for Srila Prabhupada or Param Guru. Huh? Okay. So does anybody want to say anything so far? Who is translating? Prabhuji, Anushka Mata is translating. Say again, Mata. Say again, please. Anushka Mata. Anushka. Okay. Please accept my obeisance. Thank you. Anushka, huh? You speak loud and clear, okay? So we go slow on this. I hope you all can hear me all right. So last week we had the incarnations of the Lord. And it's nice to remind you all that the incarnation of the Lord are innumerable. There was the verse in there that I mentioned in the Bhagavatam. And the fact, Ete Kamsa Kala Punjo Krishna tu Bhagavan Sayam. All the previous mentioned incarnation, either plenary portions or portions of the plenary portions, but Krishna is the original supreme personality of God. Okay? Yes. Anushka, ready? हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम भगवान के अवतार के बारे में पार्ट 2 ये टॉपिक था। तो जैसे भागवतम में मेंशन्ड है कि एते चाम्स कलापंसा कृष्णस्तु भगवान च, तो जो परम भगवान है वो कृष्णा ही है। यस प्रभु जी। Yeah. And I'm going to remind again because we're going to talk about some of the avatars of the Lord that relate a lot to us. We're going to mention in a minute. But here in the Bhagavatam, that is first canto, the third chapter, verse 26. Avatara hi asamkaya hare. The incarnation of the Lord are innumerable, like countless streams flowing from an inexhaustible lake. So there is so many incarnations. Most of them we don't even know. Okay, so this is nice to keep in mind. Okay, go ahead, Mata. तो जैसे भागवतम में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में प्रभु जी बता रहे हैं कि ऐसा मेंशन है कि अवतार ही असंख्य है, कि मतलब भगवान के इतने अवतार हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, इतने अवतार हम जानते भी नहीं हैं कि भगवान के कितने सारे अवतार हैं। यस प्रभु जी। Okay, now the sixth incarnation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who is that? Parashuram. They call the two Rams, Lord Ram and Parashuram. Oh, there's Balaram also, of course. Parashuram, he came with a specific mission. So what happened here is that the Kshatriya class got very naughty. They become essentially without control.
even the Brahmanas wouldn't be able to control the Kshatras at that time. So the idea was that this is all useless bunch of, as a Varna, the Kshatriya Varna. This is all useless. So Parashurama, he appeared to take them down, all of them, or most of them. तो अब प्रभु जी बता रहे हैं कि अब भगवान के हम छठे जो अवतार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उनका नाम है परशुराम। तो जैसे कि हम दो, जैसे भगवान एक श्री राम स्वयं और एक परशुराम, हम बलराम भी बोलते हैं, जैसे 3 राम। तो परशुराम जी जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने एक बहुत विशेष मिशन की वजह से उन्होंने अवतार लिया था। वो मिशन क्या था कि एक वक्त ऐसा था कि जो सब क्षत्रिय क्लास थे, जो भी क्षत्रिय वर्ण के लोग थे, वो बहुत उद्दंडीय हो गए थे एक तरीके से। तो उनको करते जा रहे थे, तो उनको संभालना जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है क्षत्रियों को संभालना, तो ब्राह्मणों के द्वारा भी उनको नहीं संभाल पा रहे थे। तो तब परशुराम ने अवतार लिया उन सभी को एक तरीके से प्रवचन से कहा कि उनको टू टेक देम डाउन, उनको वापस फिर एक तरीके से उनका वध करने के लिए। So Lord Parashurama, he's described in the Canto 9. There is also nice paintings. Lord Parashurama, he's kind of doing his job actually as an axe, and he's going around, fighting the Kshatras. And the idea is power. Kshatra means power. Okay, that is the part of the Varna ashram that has the power of enforcing justice. You see, righteousness. It should be guided by righteousness. It should enforce righteousness. And when this breaks down, there is brahmanas to control the kshatras by proper advice. There is other kshatras that control one kshatra. Well, let's say many kings control one king to help him get in line. But when all of the kings, they get out of line, then this amazing personality appear to take them out. हरे कृष्ण। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे कि एक इसका स्कंद, जो नवा स्कंद है, उसमें भी मेंशन रहता है। इसकी बहुत सुंदर तस्वीर, फोटोज वगैरह भी है कि परशुराम ऐसे हाथ में एक्स लिए, कुल्हाड़ी लिए वे खड़े हैं, सबका वध करते हैं। तो जो क्षत्रिय क्लास होता है, क्षत्रिय जो वर्ण है वर्णाश्रम में, उनका क्षत्रिय इन द सेंस जो शक्ति धारण करते हैं, जिनके पास बहुत बल होता है, तो फिर उनका कर्तव्य है कि समाज में वो न्याय स्थापित करें, सत्यता पर चले, सत्यता स्थापित करें। तो जब आपस में एक राजा द्वारा नहीं संभला जाता है, तो फिर तब एक दूसरे के मतलब वध करके फिर ऐसे शासन वगैरह करते हैं। लेकिन जब सब गड़बड़ाया था, तब परशुराम ने अवतार लिया था। Yes. Now, sometimes this makes us think, because we go to the Das avatar, we just jump over Parasuram, just mentioned, and then we go to Lord Ram and Krishna Balaram like that. We don't think too much about Parashurama, but let's think for a minute here. What did the Kshatras do that was so bad that an avatar of the Lord has to come and decimate them all, exterminate them? Not just one time, 21 times. 21 times. First of all, it's a long time, right? That, the new Kshatra class comes in, again they bad, again they eradicate them, then again they come back, like that 21 times. What did he do so bad that was a warranty such a punishment for the Kshatra as a class? What happened there?
तो ये हमें थोड़ा सोचने पर भी मजबूर कर सकता है। जैसे हम भगवान के जो 10 अवतार की प्रमुखता बात करते हैं, तो उसे परशुराम का भी हम वर्णन करते हैं। ऐसे फिर राम, कृष्ण, बलराम, आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन परशुराम जैसे आए थे सभी क्षत्रियों को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने 21 बार भ्रमण करा सबको ऐसे वध करते हुए। तो क्यों आखिर उस टाइम क्षत्रिय ऐसा कर क्या रहे थे गलत कि भगवान को स्वयं आना पड़ गया? ऐसा क्या वो कर रहे थे? तो हम इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। यस प्रभु जी। You see, sometimes we have a little weakness. You see, let's take that example a little bit to our personal devotional life. And some, devotees sometimes people they have weakness attached to something, and they promise guru and themselves, "I'm not going to do this," and they do it, and we break the promise, and then we become very sad. But think about this: Parasurama never gave up. He took care of those kshatras 21 times. We should never give up in our desire to bring up to our standard of devotional service. You see, we shouldn't give up. We should be like determined, like Parasuram. He killed those material desires 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, as many times as required to keep us in the level of Krishna consciousness as per regulative principles like that. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे परशुराम ने 21 बार ऐसे भ्रमण करके सबका वध करा, तो सब क्षत्रियों ने ऐसे बुरा क्या करा था? तो हम एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि वो हमारी इच्छाओं को मतलब दर्शा रहे हैं सब जो राजाएं हैं। तो कई व्यक्तियों के जीवन में कुछ कमजोरी होती है, हमारी कोई वीकनेस होती है। तो वैसे ही जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे खुद कैसे पर्सनल लाइफ में भी कुछ कमजोरी वगैरह होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने गुरु को कुछ प्रॉमिस करते हैं, हम किसी चीज़ से आसक्त होते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम उस आसक्ति को त्यागेंगे, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन फिर हम वो जो हमारा वादा था उसे तोड़ देते हैं, और फिर वो तोड़ने के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम परशुराम, जैसे उन्होंने इतनी बार क्षत्रियों का वध करा, तो हम ये सीख सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा हम 1 मिनट विचार करें, तो हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं करा। कि एक बार उन्होंने इतना भ्रमण करके सबका वध करा, इतने जो उद्दंडीय राजा थे, फिर से ऐसे और राजा उत्पन्न हुए जिन्होंने और मतलब समाज में जो अनवांटेड चीज़ें बढ़ाई, है ना? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो भ्रमण करते गए, उनका वध करते रहे, करते रहे, करते रहे। तो हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हम डिटर्मिनेशन सीख सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनको ख़त्म करते जाएं, गिव अप नहीं करें, हम उस पर बार 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 एक्शन लेते रहें। यस प्रभु जी। So I have seen some devotees, and they may have a fall down, and they feel very very bitter among for themselves. They feel very guilty, but they should take example of Parashuram to fight that which is stopping you from getting better in Krishna consciousness. This is not time to feel guilty. This is not time to feel sad. This is not time to feel ashamed. This is time to get up, clean your shirt from the dust, move forward for the goal of your devotional service. You have to be like Parashuram and kill the demon in the heart at least 21 times if you have to. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम ये कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के जीवन में हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा पतन हो रहा है, या फिर हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत किया, वो गलत किया। तो हम अपने ही प्रति बहुत ग्लानि महसूस करते हैं, अपने आप से, अपने हृदय में अपने लिए कुछ ऐसे खट्टा से कड़वाहट पैदा कर लेते हैं। तो हम परशुराम से सीख सकते हैं, भगवान के अवतार जो परशुराम है, कि हम उससे लड़ें, हम बार बार उठें, हम गिर ना जाए, मतलब उठें, अपने धूल झाड़े और आगे बढ़े, आगे बढ़ के फिर से हम कम से कम 21 बार लड़ते रहें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 21 बार। हम ऐसे जो मतलब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ग्लानि महसूस करें या फिर हम शर्मिंदगी महसूस करें, हमें ये लगे वो लगे, नहीं, हमें उठ के आगे बढ़ता रहना है और हमें हार नहीं माननी है। यस प्रभु। Okay. By the way,
we all saw the movie Nrsimha Avatar, and it seems like the next movie would be in Parasurama Avatar. That's what says at the end of the movie. This will be the next. And actually, I like to have more information about Parasurama because of all the avatars. He's a hidden avatar, and he did a lot, you know, for a long time. And exactly, what he was, the way he was, and everything is not very clear to us. We have deities of Vamana, Varaha. I don't see much of Parashuram, so it's nice to have information about Parashuram. So we'll see to that. So the next one will be Lord Ram. Yes, Martha. You got the last part? Anushka? Priji, am I audible? Yes, sir. Yes, now you are. Yes. Okay, so I was just telling about the movie part you said. तो Okay. अगली मूवी जहाँ तक है परशुराम जी के ऊपर आएगी, तो प्रभु जी ने कहा कि उनको देखने में काफ़ी अब दिलचस्पी है कि हम भगवान परशुराम के बारे में जैसे जानते हैं, तो ज़्यादा नहीं जानते हम। वामन देव, वराहदेव सब के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर परशुराम छिपे हुए तरीके से उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो उनके बारे में भी जानने को मिलेगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब फाइनली जो हम अगले अवतार की तरफ बढ़ रहे हैं भगवान के, तो अब हम बढ़ेंगे भगवान श्री राम की तरफ। यस प्रभु जी। So the next one is Lord Ram, the beautiful Lord Ram. See, ideal king, ideal son, ideal husband. You see, he defeated Ravan, great demon, and established perfect government based on Dharma. Now, Lord Rama teach us many things which touch our lives every day. तो अब हम जानेंगे भगवान श्री राम के बारे में, जो सुंदर भगवान श्री राम, जो कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र हैं। तो हम बहुत कुछ श्री राम के द्वारा हम सीखते हैं कि हम कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। भगवान ने पहले रावण का वध करा, उसके बाद फिर उन्होंने किस तरीके से अयोध्या के राजा वगैरह बने। तो अब हम श्री राम के बारे में थोड़ा जानेंगे। यस प्रभु जी। So, what can we learn from Lord Ram? He was a perfect example of a dharmic king. He was extremely following the process of the Vedic system, and he gives the ideal life for us to follow in terms of being pure in our life, purity. तो श्री राम जो है एक हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो एक परफेक्ट उदाहरण हमारे लिए सेट करते हैं कि एक आदर्श जीवन हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर धर्म का पालन करते हुए श्री राम एक राजा थे, तो पूरा जो वैदिक सिस्टम वगैरह था उसका पालन करते थे। तो हम एक आदर्श जीवन कैसे जी सकते हैं ताकि हमारे जीवन में शुद्धता आए। तो हम Lord Rama, he was a brave personality, supreme personality. He fought with enemies, defeat them. He was very, okay. He defeat his enemy, Ravan, and he even gives shelter to Ravan, or trying to. You see, he didn't see him as an enemy or just somebody that he needs some correction. But he was very smart, and he defeated Ravan, which was, a kind of a demon, powerful, that nobody could defeat him. So he
fulfill that purpose. Otherwise, if you don't defeat evil, evil grows and then take over the people that are doing the right thing. So he was a disturbance to the Brahminical life, doing things to the Brahmanas and to the society that we are not proud of. Ravan. And the ultimate thing he did was he took the wife of Lord Brahma by trickery, you see? And go ahead, Mata. Was all about. तो प्रभु जी ने बोला कि श्री राम जो थे जो है जैसे अपनी लीला में हम देखते हैं भगवान राम की तो बहुत ब्रेव थे तो उन्होंने जैसे रावण का वध करा तो रावण भी एक तरीके से सबको मतलब एक समाज में डिस्टर्बेंस था, सभी ब्राह्मणों साधुओं के जीवन में डिस्टर्बेंस था। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान ने जिस तरीके से उसका वध करा तो एज ए शत्रु से नहीं लिया भगवान ने, या कोई करेक्शन नहीं, भगवान ने उसे भी अपना शेल्टर दिया हुआ था। तो भगवान ने उसका वध करा, वो भी बहुत शक्तिशाली था रावण, हम उसके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लोग उसे एक तरीके से उससे भय करते थे लोग, तो एकदम उसको मारना कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन श्री राम ने जिस तरीके से उसे मारा तो हम सीख सकते हैं, जिससे हम सुनते हैं कि मतलब ईविल को भगवान ने नष्ट करा वहाँ पे, कि बुराई का विनाश करा, अन्यथा वो कहीं और पर बढ़ सकता था। तो बुराई का नाश करना भी आवश्यक। Lord Rama was an ideal son. His father told him, you're going to go in the forest for this many years. I think it was 10 years. You're going to go in the forest by this many years. It was like the day before is supposed to be his coronation. He's supposed to be the king of Ayodhya to take place after his father. But, you know, because of some bad advice from some maid to the queen, so she badgered the king, said, you have to tell Ram to go in exile. And he accepted. He accepted with good heart. He was not grudged. He was not complaining. Okay, I'm going to the forest, and this is, the austerity for a king that live in the palace and have all the benefits. Suddenly he's living in the forest, you see, and then his brother went him, and then his wife, Sita, you see, and so much austerity in the order of his father. And he left his brother in there. And the brother was so faithful to his elder brother that he refused to take the throne. And he just took the slippers of Lord Ram and he put in the throne. And I will manage the kingdom on your behalf. तो श्री राम जो है एक आदर्श पुत्र भी हैं, जैसे उनको उनका जब राज सिंहासन में सौंपा जा रहा था, जब राज उन्हें सौंपते उसके एक दिन पहले, जैसे हम जानते हैं कि कैकई मैया, तो उनको मंत्रा ने उनके कान भरे और फिर इस वजह से उन्होंने बोला कि श्री राम को वनवास हो, तो 14 साल का वनवास। तो उन्होंने फिर उनके जब पिता ने उनको बोला कि आप वनवास के लिए जाइए, उन्होंने इसको भी एक बहुत प्रेम से स्वीकार किया। तो उनके हृदय में कोई इससे रिलेटेड कोई ग्रज नहीं था कि ऐसे क्यों बोला, मैं नहीं जाऊँ। उन्होंने जो भी उनको आज्ञा मिली उसे स्वीकार किया और अपने जो छोटे भाई थे उनको बोला कि आप राजा का जो पद है उसे स्वीकार कीजिए, मगर वो भी अपने भैया के प्रति, अपने भाई के प्रति इतने एक तरीके से वफादार थे कि उन्होंने मना किया। और श्री राम के जो चरण पादुकाएं थी उनको उन्होंने सिंहासन पर विराजित करके बोला कि जब आप आएंगे तब आप ही वापस से राजा का पद स्वीकार कीजिएगा। Jai Ram. Of course, I just mentioned Hanuman, which was a great friend of Lord Rama, with a beautiful pastime. Who doesn't love Hanuman? Huh? Hanuman ki jai. I love Hanuman. Very beautiful pastime. There's so many. I just keep going here.
So we go to the next. Lord Balaram, he is the 8th in the list. He accepted by the Gaudiya Vaishnava tradition. This is the 8th incarnation of the Lord. Lord Balaram is the original spiritual master. He teaches us strength in devotional service and assists the Lord Krishna in all his pastimes. You see, and one time I was talking to the Pujari Mayapur, and now we talk about offering. No, they offer the plates to the deities, and sometimes there's this Asta Lakshmi, Asta Gopis, the 8 Gopis, Radha Madhava, that is Panchatattva. So they offer one plate, and I was talking. No, how is that everybody eat in one plate? So they're not fighting. No, I was being humorous, and the Pujari was, I think it was Jananivas, he was saying that, well, but the mercy of Lord Balaram, see, that plate expands, so everybody can fit in and eat to the heart's content. You see, this is a mystical understanding of the process offering. So what's a nice view, was a nice, interesting. So Balaram is strength. He is the strength in our devotional service. All right. So Balarama always assists Lord Krishna in his pastimes by creating the area by which Krishna can act, by assisting in the paraphernalia that Krishna needs to use for his pastimes, like that. तो मतलब जैसे हम राम जी के बारे में जान रहे थे, तो साथ ही राम जी के बहुत प्रिय मित्र, बहुत प्रिय दास जो हनुमान के बारे में भी प्रभु जी ने बोला कि हनुमान जैसे सब बहुत प्रेम करते हैं, जय हनुमान। और ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान श्री राम की हनुमान जी के साथ, जो सुन के ऑब्वियसली बहुत आनंद आता है। तो अगले अवतार के बारे में जब हम जानेंगे तो है 8वें अवतार अब श्री बलराम के बारे में हम जानते हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा स्वीकारित है कि 8वें अवतार अब बलराम हैं। तो जो बलराम है वो हमारे ओरिजिनल आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब वही हमारे रियल आध्यात्मिक गुरु हैं। तो भगवान की हर लीला में बलराम भगवान का सहयोग करते हैं, भगवान की हर लीला में अपने आप को विस्तारित करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो एक बार प्रभु जी अपना एक खुद का अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मायापुर में उन्होंने एक बार पुजारी जी से पूछा, वहाँ शायद से उस टाइम पर जन निवास प्रभु से, कि जब भगवान को भोग लगता है राधा माधव पंचतत्व को अष्ट सखी, तो उनको एक ही प्लेट में भोग लगता है। इतने सब लोग हैं आपस में, वो लड़ते नहीं हैं क्या कि एक ही प्लेट है? तो एक व्यंगात्मक तरीके से प्रभु जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा, पुजारी जी ने एक बहुत ही इसका अवश्य तरीके से उन्होंने एक चित्रण से उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं लड़ते बलराम की कृपा से। तो बलदाव जो है हर तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा के लिए एक्सपैंड करते हैं। जो भी हम वस्तु हैं, जो भी स्थान आदि इत्यादि हम भगवान के लिए देखते हैं, भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं, वो सब बलराम का विस्तार है। तो बलराम अपने आप को प्लेट को प्रसाद के रूप में, प्लेट के रूप में अपना विस्तार करते हैं कि सभी बिना लड़े अपना अपना हिस्सा ले लें। तो मतलब बलराम ही हमारे जो ओरिजिनल गुरु हैं, और वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बल हमें प्रदान करते हैं। यस प्रभु जी। So Lord Balaram is an easy-going personality, but be careful how you show respect to Lord Balaram. At one time, some assembly of sages, when Lord Balaram came in, all the sages stood up because they knew what Lord Balaram is. But this particular one, he kept sit down and kept like making faces to Balaram. Seems like he was not very happy. So Lord Balaram didn't like the disrespect. So he took a blade of grass, and by his power, he makes a blade of grass, like, I don't know, like a dagger or something, and just stuck in the guy's heart or head, I don't know, something like that, and send him to the next abode of Yamaraj.
You just disrespect Lord Balaram, and that's what you get. So Lord Balaram, he is very merciful, but to disrespect a great personality, not just Lord Balaram, any personality, is bad business for any of us, particularly devotees, not respecting a proper personality. Lord Balaram and demigods, you see, we should respect them and know our place. We know their place, and with true respect, we establish a communication of devotion. तो बलराम जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, इजी गोइंग पर्सनालिटी, जैसे कि प्रभु जी ने बोला, मगर सावधान रहिए क्योंकि इसका प्रभु जी ने एक उदाहरण, कोई पास टाइम था, उसमें एक सभा में गए थे, तो वहाँ सभी साधु जन जो थे मतलब आए थे, तो बलराम को देखकर वो सब सतर्क हो गए, मगर वो व्यक्ति एक कोई था, वो नहीं सतर्क हुआ और वो बैठा ही था और बलराम को कैसे मुंह बना रहा था। तो एक तरीके से वो अपमान कर रहा था बलराम का, यानी गुरु तत्व का। तो बलराम ने एक कांच का तिनका लिया, उसको एक खंजर में परिवर्तित और उसके हृदय में शायद से खोपा और उसे तो मतलब सावधान रहने की बात है कि हम इन जनरल किसी से भी डीलिंग में जो बहुत वरिष्ठ व्यक्तित्व होते हैं या कोई भी देवी बहुत हम सम्मान का भाव रखें। यस प्रदीप। In the arena of King Kamsa, which one of the plots of King Kamsa was to create a trap that the boys would fight with Chanura and Mustika. Two big, strong men, fighters, professional fighters, big muscles. Wow! I like Chanura Mustika because when I travel with the Sankirtan party in Bengal, me and this devotee Ganga, we used to play Chanura and Mustika. And we used to go in the front row. And the little kids, they, mommy, they run away. Anyway, this was a nice pastime. Chanura Mustika. And people in the assembly, how is that fair? How is this fair? These two young boys fighting these brutamontes, we call in Brazil, these wrestlers, this is not a fair fight. And this is exactly what Kansa wants. But Kansa, he's a demon, and a demon do not know the Lord. The devotee knows the Lord, but the demon do not know. So he represent the boys, thinking, oh, they're just boys. We're gonna, smash them, or kill this Krishna and this Balaram. But the result was different. तो जैसे एक बार कंस के जो अखाड़े में युद्ध हो रहा था, तो उसमें बलराम थे, उन उस टाइम पे जो विरोधी थे, उनके सामने उनके ओपोनेंट्स थे चानूर और मुस्टिक। तो प्रभु जी ने बताया कि जैसे कभी बंगाल में से नाटक वगैरह होता था शायद, तो प्रभु जी उसमें और उनके साथ एक और कोई भक्त, तो चानूर और मुस्टिक का वो किरदार निभाते थे। तो फिर ऐसे सबको डराते थे और फिर छोटे बच्चे डर जाते थे, तो मम्मी मम्मी चिल्लाते थे। तो फिर मतलब लोग सोच रहे थे कि चानूर और मुस्टिक के प्रति के अगेंस्ट में ये दो छोटे मतलब इतने कोमल बालक कृष्ण बलराम है ना, इनको कहाँ मतलब लड़ने के लिए छोड़ दिया, इतने तो भयंकर बॉडी बिल्डर्स हैं आगे से। तो लोग मतलब ऐसे चानूर मुस्टिक खुद बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, लेकिन भक्त जानते हैं कि एक्चुअल में भगवान का क्या स्थान और क्या शक्ति है। तो उनसे जब भगवान का युद्ध हुआ तो प्रभु उस बारे में बता रहे। यस। So Lord Balaram, very strong. Okay, it's like, anyway, I'll leave it at that. Now we're gonna go to Lord Krishna. Hey, Krishna tu Bhagavan Swayam. Now, what can I say about Lord Krishna? We can sit in here
for 1 year and talk about Lord Krishna. So the important is Krishna is the greatest friend. He's the one who is the devotees are very dear to Krishna. You see, he likes his devotees. And he's always looking up for his devotees. As long we're sincere, we're honest, Krishna will be there for us, you see, and will support our endeavors to be advanced in our spiritual life, which is, is always a daily struggle, but it's a good struggle because we have to struggle anyway in the material world. You get a job, you're struggling. You go to school, you're struggling. Get up early, you do this, that, I have to do all these things. Might as well struggle for having the heart of the Lord, Krishna. You see? Go ahead, Mataram. तो बलराम जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। और अब हम बढ़ते हैं अगले अवतार की तरफ, भगवान के जो नवे अवतार हैं, कृष्णा। तो कृष्णा जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो परम भगवान स्वयं हैं और सबके सबसे ज़्यादा जो प्रिय मित्र हैं कृष्ण हैं, है ना। सबके जो सूरत बोलते हैं, तो भक्त जो है भगवान को, उनके जो भक्त हैं और कृष्ण को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। केवल बशर्ते हम थोड़ा सा मतलब सिंसेयर हों, थोड़ा सा हम मतलब सच्चे हों, सरल हों, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं तो कृष्ण जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमारा हर तरीके से हमारा बहुत मदद करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, हमारा मतलब देखभाल करते हैं। तो हमें अच्छे से रहना चाहिए बस। और जो हमारे डेली दिनचर्या के अपने संघर्ष हैं भक्ति के, उसको भगवान ख़त्म करते हैं। भक्ति के ही नहीं, हम हर जगह, जैसे प्रभु जी ने बोला, संघर्ष ही कर रहे हैं। स्कूल में संघर्ष, कॉलेज में संघर्ष, काम में संघर्ष, यहाँ संघर्ष, वहाँ संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। तो भगवान हमारा वो संघर्ष कम करके हमारी सहायता करते हैं। यस प्रभु जी। So, all these incarnations of the Lord, when you hear, it creates an attraction. Just like you hear from celebrities. Oh, Asvara Rai, she's doing something. This one, I don't know all the Indian celebrities. Some Hollywood celebrity, they're all crazy, but people talk about them. So we hear Krishna is the greatest celebrity. He's here for 5,000 years, and he's going to be here for another 5,000, and then many 5,000 years after that. Krishna is always a celebrity. Other ones, they come and go. You don't hear about them anymore. The material activities fade away in the time. But Krishna is fresh. After 5,000 years, we're still talking about Krishna, still excited about his pastimes. So Krishna, he brings something very beautiful, which is his relationship with his devotees, which, in the other incarnations, they perform a certain type of activity, very wondrous, like Vamanadev, covered the whole universe. Parashuram, incredible power to defeat the Kshatriya race. You see, each one perform amazing feats, but Krishna, he deals with relationship with his devotees, which is one of the important parts of growing up in devotional service, is this personal relationship with the Lord. तो भगवान के जो हम हर अवतार के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो बहुत आकर्षित हैं, बहुत एक तरीके से हमें आकर्षण महसूस होता है। जैसे हम कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में अगर सुनते हैं, जानते हैं, जो कि प्रभु जी ने बोला, सब
पागल हैं, लेकिन लोग बहुत उनके प्रति जानने में बहुत रुचि रखते हैं। तो एक्चुअली जो असली सेलिब्रिटी है, जो सेलिब्रिटीज़ का भी सेलिब्रिटी है, वो कृष्णा है। ही इज़ द सुप्रीम सेलिब्रिटी एक तरीके से। क्योंकि बाकी सब जो भी भौतिक जगत में आते हैं जाते हैं, तो भौतिक क्रियाकलाप वक्त के साथ एक ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, इतने वक्त से हम सुनते हैं, 5000 वर्ष पूर्व भगवान आए थे, मगर वो दिव्य हैं, हर वक्त वो फ्रेश हैं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं जैसे नव यौवनम, है ना, तो हर वक्त वो फ्रेश रहते हैं बहुत। और भगवान एक बहुत सुंदर वस्तु प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने अपनी लीलाओं के माध्यम से। वह उनके भक्तों के साथ जो संबंध है, तो भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं वगैरह करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इससे भगवान आते हैं। तो वो सबको एक तरीके से वही आनंद प्रदान करने वाला है। यस प्रभु। So, in the Bhagavatam, very much 1:3:28, they establish, there's many, it mentions some incarnations, but establish of all these incarnations, this original is Krishna to Bhagavan Swayam. It's very beautiful verse, this verse. You see, establish Krishna as the supreme personality of Godhead, the original personality of Godhead. Now, Krishna, he has rasas with his devotees, friendship rasa, madhurya, loving rasas. You see, parental relationship, you see, with his devotees. That is amazing. Is the Supreme Lord have this kind of relationship with his devotees. And we, by meditating on this, we enter in the realm of his pastimes. You see, by hearing and by meditating, we enter in the realm of his pastimes. Because if it ever happen that Krishna take us back, we're going to fit somewhere in the spiritual sky, spiritual world. We're not just popping there and say, hey, here I am. Let's buggy here. We're going to go under a devotee of the Lord, under the cowboys, gopis. We have a boss, somebody that's senior. I'm going to be senior to somebody younger. It is a whole system that goes in there. You see, so we already, by hearing these pastimes and getting into this personal relationship, we get primed to enter in the spiritual world and be able to function in there, in a beautiful way. I heard that after being a devotee, like you are now, when you're ready, we take the next birth in Vrindavan, in one of the relationships with the Lord in Vrindavan. And from there, we go back to the Goloka Vrindavan, which is a very special place. You see? Go ahead, Mata. That's a good one. तो प्रभु जी ने बताया, जैसे भागवतम में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय 28वें श्लोक में हमें पता लगता है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, उसमें जो हम ओरिजिनल अवतार की बात करते हैं, जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कृष्णा है। कृष्णा ही स्वयं परम भगवान है। तो वही सब अवतारों के स्तोत्र हैं, एक तरीके से हम जान सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम है। और भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं, अलग अलग रसों में भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। जैसे साख्य रस अपने दोस्तों के साथ, अपना प्रेममय रस, माधुर्य रस, मतलब माता पिता के प्रेम के रूप में वात्सल्य रस। तो ये बहुत अद्भुत है किस तरीके से भगवान अपने भक्तों के साथ उनका संबंध है, अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं कि परम भगवान अपनी लीला। और हमारे लिए ये बहुत श्रेयस्कर है, केवल सुनने मात्र से, उस पर ध्यान मात्र करने से हम इसके एलिजिबल बन जाएंगे, इसके तुल्य बन जाएंगे कि हम उस भगवान की लीलाओं के जो स्थान है, उनका जो रेल्म है, उनका वो जो घर है, हम वहाँ प्रवेश कर पाएँ। लेकिन प्रवेश ऐसे ही नहीं कर सकते कि सुनते सुनते चले गए गोलोक वृंदावन। मतलब हम अकेले नहीं जा सकते, हमें किसी के अंडर रहना पड़ेगा, कोई हमारा बॉस होना चाहिए। तो जैसे हम सभी गोपियों के बारे में सुनते हैं, जो सभी हमारे आचार्य हैं, सब कोई मंजरी वगैरह है, तो हम किसी
के अंडर, किसी के गाइडेंस, किसी सीनियर के अंडर रहेंगे, तो वहाँ से हम शिक्षण लेके जब श्रवण करेंगे और फिर उस पर ध्यान करेंगे, तब हम उसके लायक बनेंगे कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएँ, भगवान की लीलाओं में भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसे उजागर कर सके एक तरीके से। यस प्रभु जी। Now, we're talking about Lord Krishna, and we talk about relationship with Lord Krishna, which is don't find very much with other incarnations with the Lord. Lord Nrsimhadev had a bit of Prahlad Maharaj, like a friendship or a filial or whatever relationship was, and what Vamana, that Bali Maharaj, that he gave the 3 steps of land. But Krishna have so many devotees. Father, mother have so many devotees. They have cower girls, cower boys. He had a plethora of friends and associates. You see? So therefore, I have to mention this hidden incarnation of the Lord. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namte Gaura Tisena. This magnanimous incarnation. Who is that magnanimous incarnation of Lord Krishna? This hidden incarnation. Who can tell me? Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Who agrees with Anushka? Who agrees with Anushka? She said, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ah, I see. Everybody agrees. Very good, Anushka. You score 100%. You see, Lord Chaitanya. Now, with all this relationship, Krishna come and he is giving a relationship to the devotees that before we have no idea. We only know material relationship that we have in this material world. In Lord Chaitanya, he brings us to teach us to be a devotee in any of those relationships. You see, Lord Chaitanya, he teaches us how to be a devotee, how to be a devotee in great love for Lord Krishna. You see, Lord Chaitanya, he has, I would say, painful love for Lord Krishna. Not painful in pain, but painful intense. So intense that hurts the heart. From a material perspective, of course, this is all transcendental ecstasies of Lord Chaitanya. You see, Lord Chaitanya come to teach us how to be a devotee, how to be compassionate. And there is one more secret to the appearance of Lord Chaitanya. Go for it, Anushka. Let's get this one going. तो प्रभु जी ने बताया, इससे पहले एक पॉइंट रह गया था कि प्रभु जी ने कहीं सुना था कि भगवान के धाम प्रवेश करने से पहले सभी हम वृंदावन में कुछ ना कुछ रूप धारण करेंगे, फिर वहाँ से हम गोलोक जाएंगे। तो उसके बाद प्रभु जी ने बताया कि जैसे भगवान के जो भी अवतार के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, जैसे नरसिंह देव, उनका हम जानते हैं, प्रहलाद महाराज के साथ जैसे उनका संबंध था, तो एक वात्सल्य भाव बोल सकते हैं, मतलब जो भी संबंध था। फिर वामन देव बड़ी महाराज के साथ उन्हें 3 पग में पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा त्रिलोक उन्होंने सौंप दिया था। हम जो भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एक ना एक भाव प्रकट होता है। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, तो हम उसमें हर प्रकार का रस देखते हैं कि भगवान के इतनी सारी गोपियां हैं, उनके माता पिता हैं, सभी ग्वाल बाल हैं जो भगवान का, उनके साथ अलग संबंध है, भगवान के भक्त हैं और भगवान के माता पिता हैं। तो भगवान के इतने सारे सखा हैं, तो भगवान का सबके साथ बहुत प्रेममय संबंध है। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे, हमें उस संबंध के बारे में जानना है, हमें ऐसा कोई संबंध स्थापित करना है। तो संबंध कैसे स्थापित करें भगवान के साथ के लिए कलयुग में भगवान स्वयं आए हैं। एक बहुत ही
बहुत ही वदन्याय नहीं वदन्याय अवतार लेकर तो वो कौन है प्रभु जी ने बताया, तो कृष्णा खुद आए हमें सिखाने कि हम भगवान का भक्त कैसे बने, भगवान की भक्ति कैसे करें। तो कृष्णा चैतन्य रूप में आए हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हम भगवान से वो संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, कृष्ण के साथ वो जो हमारे संबंध है वो कैसे हम वापस से स्थापित कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रेम कब हमें प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं और उनके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक प्रेम है। मतलब बहुत इतना इंटेंस प्रेम है, इतना डीप प्रेम है कि वो एक तरीके से दर्द में परिवर्तित हो गया। तो ये बहुत दिव्य लीलाएं हैं। हम मतलब भौतिक जगत के अगर हम दृष्टिकोण से समझें तो समझने के लिए थोड़ा कठिन है, मगर वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु हम तक प्रदान करने आए। यस प्रभु जी। So, this is one amazing feature of Lord Chaitanya. See, all the incarnations, they came, they did their mission, they left. Sometimes, Lord Rama we worship in the temple, we have even Lord Krishna, we worship at the temple. But Lord Chaitanya, he left us with a work to do. It's called the Sanctum movement of Lord Chaitanya. You see, what I'm trying to say is Krishna pastime finish, and then we worship his, remembering him and in different ways, and all the other incarnations, like the Varaha, Vamana. You see, we worship them in different ways, but they left and they complete their mission. But Lord Chaitanya, he did not complete his mission. You see, it's incumbent to us to finish the mission. That means we right now are part of the Lord Chaitanya mission. No? We are part of Lord Chaitanya's mission right now. And those after us, those we preach, they will be part of Lord. So Lord Chaitanya, it's not like he left, he's still here. See, that's the beauty. Lord Chaitanya is still here, and with this movement, he's still going on. You see, and that's how the Lord Chaitanya mercy is expanding. And with the mercy, he himself is expanding. So that's amazing. Mahavadanaya is the most munificent incarnation because this mercy is still here with us right now. I'm preaching. All of you are preaching. You talk to people around you. You try to, distribute the book, give it prasadam, organize Sankirtan programs. We're part of Lord Chaitanya. He's there next to us, shoulder at shoulder. You see, don't think he's not there next to you. He is there next to you. तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं भगवान के इतने महावदन्य अवतार हैं। हम देखते हैं भगवान के जो भी अवतार हैं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण तक, हम उनकी पूजा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें हम स्मरण करते हैं, उनका याद करते हैं, उनको पूजते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो भगवान किसी अपने मिशन किसी मिशन से आए, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उसके बाद अपनी लीला समाप्त करके, हम भगवान की मतलब लीला समापन की कथाएं पढ़ते हैं, लीला समाप्त करके भगवान चले गए। लेकिन जब भगवान चैतन्य रूप में आए तो हमें कुछ काम दे गए करने के लिए। लीला समाप्त नहीं हुई, अभी भी हमारे साथी हैं, हमें संकीर्तन आंदोलन देकर गए, जो कि मूवमेंट अभी भी चल ही रहा है। उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं करा, वो हमें हमारे ऊपर ये भार सौंप के गए कि हम उनका ये मूवमेंट आगे बढ़ाते जाएं। और इसके साथ चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ साथ चलते रह रहे हैं, हम हमारे साथ ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना लीला पूरा नहीं करा है, अभी भी चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से। तो हम सब जैसे प्रचार कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बोला कि किसी न किसी माध्यम से हम दूसरों तक ये जो कृष्ण का प्रेम है उसे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने करुणामय अवतार हैं कि वो सब तक ये करुणा पहुंचाना चाहते थे। तो अपने आंदोलन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सब तक वो कृष्ण प्रेम पहुंचा रहे हैं। तो वो हमारे संग ही है हर वक्त, वो अपनी लीला समाप्त करके नहीं गए। यस प्रभु जी। So, if you have any doubt, just think about this. When you chant the holy name,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You heard from somebody first time. That person heard from somebody first time. And you go back to the lotus mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That holy name carries the DNA of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's right there in the holy name. Because he came and bring this to us. And of course, Krishna is there too. But the process is Lord Chaitanya that giving to us. He came to our ear through the mouth of Lord Chaitanya. It's amazing. We just don't see it. But if you go back, who you heard from first time, who they heard from first time, at the end, you'll be Lord Chaitanya that did start this. You see, it's amazing. So next time you change the holy name, you meditate in the lotus leap of Lord Chaitanya, conditioned souls. तो अगर कभी इस पर कोई शक भी हो, मतलब जैसे महाप्रभु हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, उनके आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जब भी सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो सबसे पहले ही हमारे कानों पर पड़ा, तो किसी के द्वारा पढ़ा, उसके कानों पर कैसे पढ़ा, किसी के द्वारा पढ़ा, तो ऐसे करते 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 जो हम पीछे जाते जाएं, किसके कान पे कहाँ से पढ़ा, कहाँ से किसने बोला, फाइनली हम चैतन्य महाप्रभु तक पहुँच जाएंगे, जब सबसे पहले उनके श्रीमुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकला, फिर वो किसी के कानों पर पड़ा, जब हम गुरु परंपरा के बारे में बोल, तो वहाँ से करते करते हमारे पास ये महामंत्र आया हुआ है। तो जब भी हम ये महामंत्र बोलते हैं, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए हैं एक तरीके से, जब कृष्णा भी है ऑब्वियसली, जैसे प्रभु जी ने कहा, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये मंत्र के थ्रू, महामंत्र के थ्रू, हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू हम तक पहुँच रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये जो हमें महामंत्र मिला है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। उसका एक उदाहरण प्रभु जी ने जैसे दिया। यस। So, because we're in the time now. I can get the red card soon. So we finish with Lord Kalki. I have to mention Lord Chaitanya. I had to mention Lord Chaitanya. So Lord Kalki is an amazing incarnation of the Lord. It's amazing. Come in a white horse, chop some heads around of bad people. You see, he comes to take the trash out to start a new Satya Yuga at the end of this Kali Yuga here, which we are in about 500 years, 5,000 years. Okay. Interesting, because today we had a business meeting with this young entrepreneur. So we talk about some tech stuff, whatever. At one point, we start talking about, he asked about Kalki, because see, with the vote stuff, he just started talking about Kalki, and he was very much, inquisitive about Kalki. Some people think Kalki will come in 200, 300, 500 years. They don't have the time frame properly situated. They are Indians. I don't know what kind of Shastra they're reading. But Lord Kalki comes, at the end of Kali Yuga, which is 432,000 years and 5,000 years already there. So there's like 428,000 years to go. And he comes in a town, Sambalpur, in Orissa. Okay, his father, mother is already there mentioned. And at that time, people will be very degraded. Short, the tallest guy will be like maybe 2 feet, 3 feet, no vegetables, fruits, or very low nutritional value. Everything very, discarded. It's the end of Kali Yuga, things are deteriorating. You see, so it needs a rejuvenation. So Lord Kalki comes to make that transformation happen. Now, this is in the future, and it must be an amazing,
It must be an amazing apparition of the Lord. You know, white horse comes, it's amazing. So I just leave it at that because all appearance of the Lord is amazing. Kurma, Matsya, Vamana, small little boy, take 3 steps of land. All incarnations of the Lord. They're amazing. And every time you hear, you go, you miss a breath in your heart. Said, you can't just, if you're devoted and you train in devotional mind, this is the Lord. If you're carving, this is mythology, it's some fairy tale. But I tell you, they're missing the nectar. It's close to them because they needs the ointment of love to see the Lord. They don't have that. They have to chant more. You see, they have to chant Hare Krishna. So I leave you with this, Lord Kalki. I love Lord Kalki. Future love. That is so nice. By the way, I had some cows and we had 10 cows. At one point we decided we cannot take care of the cows anymore. So we're going to give to somebody that can take care. So there was a good friend of mine. He has a place, guess what? Where? Guess where? Right in Sambapur, right there. So I'm thinking, my cows, they're going to go, generate enough cows in 428,000 years. Maybe the cow at that time will give some milk for Lord Kalki. That'll be nice. Huh? Everything's possible. Okay, I'll take a couple questions. Those questions you cannot sleep tonight. You'll be like thinking, oh my God, what about this? What about that session? Beautiful podcast. I love it. Talk about the incarnation of the Lord. Could you hear me? Surab, right? I talk already about, they're going to have a presentation for Srila Prabhupada. Okay. So they all know that. You want me to talk some more about that? It was recorded, whatever you said about homage. Okay. They all know. We're going to have, an offering to Prabhupada in September, right? Then we're going to coordinate this and we're going to have a talk. Does anybody have a question? Yes, Prabhuji, I have a question. Prabhuji, translation. Yes. कुछ बोलना है नहीं Translation, Anushka. Okay. Anushka, hit it. So the last part of Kalki Dev is missing. It's just कि प्रभु जी ने बताया कि फाइनली आखिरी अवतार तक हम पहुंच गए हैं. भगवान का जो भविष्य का अवतार है, कल की अवतार, जो कि सफ़ेद घोड़े पर भगवान आएंगे और सबका मुंडी काटेंगे जो भी दुष्ट हैं. और उसके बाद जो कई लोग ऐसा मानते हैं भारत में कि अभी कल की 200-300 साल में आ जाएंगे, अवतार लेंगे. पता नहीं वो कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, मगर जैसे कलयुग का अवधि 4,32,000 वर्ष है, तो सभी 5,000 वर्ष बीते हैं, तो लगभग 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं. तो 27-28,000 साल. तो उसके बाद फिर कल की अवतार जब आएंगे तो उन सब दुष्टों का विनाश करेंगे. कलयुग में धीरे धीरे जो भविष्य में ऐसा होगा, सबकी हाइट छोटी होती जाएगी, जो खेत है उसमें कुछ अनाज नहीं उगेगा, खाने में पोषण नहीं होगा. जब असली कलयुग आएगा ये तब की बातें हैं. तो अभी 5,000 वर्ष की है और फिर कलयुग से जो सत्युग का ट्रांजिशन है, कल की अवतार भगवान के वो लेके आएंगे. उनके बारे में सब मेंशन्ड है कि वो संबलपुर में, उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ पर भगवान अवतार लेंगे. कौन उनके माता पिता होंगे, तो प्रभु जी ने अपना बताया एक एग्जाम्पल कि उनके घर पर गाय
थी, लगभग 10 गायें, तो उन्होंने किन्हीं को देने का बात करा, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनका केयर कोई और करे अगर अभी। तो उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि वो लेंगे, और उनके दोस्त संबलपुर में ही रहते हैं कोइंसिडेंटली। तो प्रभु जी ने बोला उनको वैसे कल की अवतार बहुत पसंद है। तो उनके जो दोस्त हैं, तो प्रभु जी का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब 4 लाख जो अभी 27,000 साल बचे हैं, तब तक जो प्रभु जी की गाय हैं सब अच्छे से फले फूले, और उनके जो वंशज है आगे जाके फिर कल की अवतार के लिए खूब ज़्यादा जो दूध घी दही उत्पन्न करे। तो प्रभु जी ने कहा कुछ भी संभव है। तो बस आप सबका कोई प्रश्न है, प्रभु जी ने पूछा, जिसको लेकर आप रात को सो नहीं पाएंगे, बहुत तीव्र उत्कंठा, तो आप सब पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you, Mata. All of you, you're in Ekadasi today, right? Ekadasi, okay. It's a kind of different day. It's anyway. So I want to first thank you, Anushka. Fantastic job. I really like it. You're getting stronger by Thank you for the day. providing me this service to Saurabh Prabhuji, Neha Mata, Anta Mata, and Soy Prabhuji, Kushi Mata, and Prabhuji especially. All glories to Srila Prabhupada. I'm really very sorry. I apologize for any mistake I've done in between and anything if I take casually. So I'm sorry, and thank you so very much for giving me this service opportunity. Please accept my humble obeisance. Hare Krishna. It's okay. Thank you so much. Thank you, Neha, for प्रभु जी ने रिपोर्ट प्रभु जी MC this. प्रभु जी ने Saurabh, you उमेश have को लेकर जो anything बोला to है say? वो रिकॉर्डिंग हुआ है क्या? प्रभु जी खुशी माता बोल रही है कि नहीं हुआ रिकॉर्ड। ओ प्रभु जी Yes. they didn't record your homage speech, so could you please repeat again whatever you said about homage? To So say we'll about recording. Prabhupada Day, right? Yeah. Okay. I'm sorry because, see, look, this is my 10 cents, 10 rupees, headphone, which was creating havoc in society. I have to get a new one, but I couldn't find it yet, so I will find. So, okay, we're going to have a Prabhupada Day. We're going to either talk, right? Or we're going to give a clip. Better talk, right? We talk, huh? But we can offer homage by writing, Offer what? offer homage. Homage, yes. Letter. Yes. We So yeah, offer talk about homage personally or to the clip. We can make a clip and put it there, or we can just no. offer. Prabhuji, we create a website so they can write and they can put there, and we will make Okay. a book, homage book for Prabhupada, and we'll offer it to Okay. Prabhupada. You send the link for the website, and we can all send, have a clip in there like that. So anybody has a quick question? Whoa. Yeah, Prabhuji, Uh, you say something about this homage. You just about say it? something like that. Yeah, you say something for homage, just like you say everybody. Last year you share some word for their inspire to read. Sorry, to write to Srila Prabhupada. Something to write for Srila Prabhupada. Yeah, Yes. yeah. So I'm asking to you. You just called the old devotees for write homage to Srila Prabhupada. To write a homage. Now, to write Okay. to Srila Prabhu ji, Prabhupada, yes. is telling you to make an announcement regarding it. I make an Right. announcement tonight. Where do I make an announcement? Here? Yes. Yes, we're recording right now. You That's just why. announcement or invite for right. Okay. So you ready for my announcement? Yes, Prabhu ji. You're gonna tape, right? Okay, so here goes. 3, 2, 1. Here is Bhagavatamrta Das. I'm inviting everyone to write a homage or send a clip
we're going to have a specific, how to say, a website that you can put your homage in this website, so we can now share in the appropriate time with the homage for Srila Prabhupada. So I invite you all to participate. I'll be very happy to have all of you, serving Srila Prabhupada in this capacity. And I just remind you that when you talk to Srila Prabhupada, you come to know a lot of things about yourself that you didn't know was there. That's for sure. Okay, so I pray to all, have a good homage, a nice clip, and let's go from there, okay? Hare Krishna. Well, thank you so much, Prabhuji. Cut. Yes. Was good? Yes, Prabhuji. Thank you. Thank you so much. Yeah, red card.